the variance. A happy Independence Day to you all. I am Kriti Kumari and it's my privilege and honor to be a host for today's celebration. Independence Day is not merely a day of celebration. It is a reminder of courage, sacrifice and determination of those who fought for our freedom. It is also a contribute to us building a stronger and better India. Independence Day of our nation. Let us cherish the freedom we have inherited and remember our spirit soaring high. Let us begin today's celebration. A college who has aspiration in the field of games and sports. Reverend Father Michael Minch S.J. to kindly come forward for hosting our national flag. As the flag rises, we see the vibrant colors of our national symbol soar upwards. The saffron stands for आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और इनके जैसे अनगिनत वीरों ने हंसते हंसते देश की सजा दी जाती, कोई भी सजा की बात होती थी बिना सुनवाई का, और इन्हीं सब चीजों से हमारे वीर सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है ताकि हम स्वशासित हों, हम अपने ऊपर स्वयं हम राज करें। The question arises in my mind is, are we really free today? Have we got the freedom, the true freedom of choice? Do we have the chance of choosing something that we want? I think no. Today, different types of slaveries are there. The first one is, we are under slavery of corruption. The corruption has become all-pervading. The corruption has become omnipotent. The corruption has become omniscient. करप्शन इतना शक्तिशाली बन गया है और चारों ओर ऐसे फैला हुआ है, जकड़ा हुआ है कि हम उसे पार नहीं जा सकते हैं। ये हमारे भारत देश की स्थिति है। दूसरा है, we are, let me mention one, the fascist ideology, the ideology of Hitler, the ideology of Mussolini. Today, the people of India are losing their faith in the judiciary. Even clear example of losing our faith in judiciary is now just presently united to honor the review of the law students. And the law students said, no, we don't want to receive as cockroaches. And it is also very sad that the president of Bar Council, Mishra, he announced that such students will not be allowed to practice
their profession anyway. But thank God there was a pressure and then he had to take back his words. Of India today. And if you see the indexes, with regards to human rights in the index, India is ranked at 110. Gender disparity, India is rated as 131st. So these environmental degradation, India ranks 176th place. So these indicate the needs to fight for the justice, to fight for freedom again. And today, the Gen Z and Gen Alpha, they are shouting, जेंडर डिस्पैरिटी से आज़ादी, शिक्षा के बदहाल से आज़ादी, और ये जेन जी करके दिखाया। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को पदच्युत कर दिया, उन्हें हटा दिया, और पीएमओ को इन जंतर मंतर से इन नवयुवक युवतियों ने हिला डाला। उनके बीच में भ्रम पैदा हो गया कि अब वो असमंजस में पड़ गए कि अब हम क्या करें तो क्या करें। और ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जेन अल्फा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, अभी राजस्थान तक पहुंचा है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतर के चिल्ला रहे हैं कि हमारे स्कूलों की 5,000 विद्यार्थी कैसे पढ़ा सकते हैं। अब ये जेन अल्फा भी रोड कर गया है। आज with hot blood, with lot of enthusiasm, you have to fight for your own cause. No one is going to fight for you. Politicians are not going to fight for your right. You have to fight for your right. आज तुमको ये कहना होगा, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन भरा या वतन चाहिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। तुम्हें ये भी कहना होगा, जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तुमको ये कर सकना चाहिए। आजादी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, ये वीरों की कुर्बानी का कभी ना, जो विभिन्न भागों में देश के विभिन्न भागों में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम सभी नतमस्तक होते हैं हमारे सभी वीरों के प्रति, जो भारत के इतिहास में, भारत के विभिन्न ऐतिहासिक खंड में लेने के लिए अपना प्राण गंवाए हैं। आइए हम उन सबों से प्रेरणा लें। थैंक यू। जय हिंद। For your gracious address and for guiding us with your wisdom. We shall now continue our celebration with a melodious patriotic song. I invite our school choir to present their performance. इसकी महक और ना कहीं
कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। ओ, 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 से लेके कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारी। हमारी पर एकता न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। सदियों से है आबाद मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। जिंदाबाद कहेगा। मेरे गोलगार कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। Wonderful performance. Your voice truly added warmth and spirit to this celebration. As we come to the final part of today's program, I hope this occasion has left us with a renewed sense of gratitude towards our nation and the freedom we cherish. To formally conclude the program, I invite Ma'am Farad to deliver vote of thanks. One and all. Honorable Chief Guest, Principal of St. Xavier's Inter College, Reverend Father Michael H. S.J., Principal of Degree College, Reverend Father Varghese Palli S.J., Vice Principal, Reverend Father Jesivaj S.J., Exam Controller, Reverend Father Daniel Tudu S.J., Deacon Innocent Tudu, respected faculty members of Inter and Degree College, and non-teaching staffs and my dear students. As we come to the conclusion of this 80th Independence Day, first and foremost to thank Almighty God for His endless grace and blessings that made to us and every citizen gathered here. I express my heartfelt gratitude to our respected Chief Guest, Reverend, this significant occasion and for inspiring us with valuable thoughts on the importance of freedom, unity and patriotism. I extend my sincere thanks to all the dignitaries for gracing this occasion with their presence and making this day more meaningful. I would also like to thank and appreciate all the teachers, non-teaching staffs and students whose sincere efforts, dedication and enthusiastic participation made this program a success. A special appreciation Goes to all the students who presented such a wonderful performance and speech that brought the spirit of freedom alive. May we always uphold the value of freedom, equality, unity and responsibility and contribute positively towards the progress and development of our beloved country. Once again, I thank everyone. Vande Mataram. College, attention! Stand at it! Attention!